Hi everyone, my name is Chandan and I welcome you all to this platform of Utilitarian IAS Indian Polity की 2000 MCQs की सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं. This is going to be test number 66. 65 test we already have completed, of which 1300 tests questions we already have completed. So today we are starting our question with 1301. If you have not watched the previous question or if you have not attempted previous tests, make sure that you go ahead and attempt all those tests so far that we have done in number of 65. Now we are starting today's series with this 1301. The jurisdiction and power of High Court other than those specified in the Constitution can be changed by, so it can be changed by Parliament as well, and it can be, to some extent it can be changed by state legislature as well. So the answer for this is going to be both A and B. This type of question we do remember that in series of 600 to 700 somewhere this kind of question we already have attempted, but anyway this may be a revision. So C is the right answer. A High Court has the power of superintendence over all courts and tribunals functioning in its territorial jurisdiction. This power is considered very broad and extensive. इस पावर को, हाई कोर्ट की इस पावर को, सुपरिटेंडेंस की पावर को क्यों ब्रॉड बोला जाता है? So because it covers not only administrative superintendence but also judicial superintendence. Yes, this is the job of the High Court. It can suo motu and not necessarily on the application of the party. So yes, it can take actually this statement is incomplete. It can take suo motu cognizance of such certain cases. ठीक है? So yes, that's correct, right? High Court does have power. High Court and Supreme Court does have power कि suo motu भी वो cases जो है pick up कर सकते हैं without any aggrieved person directly coming to him or her. Right, so correct बताना है. Both 1 and 2 are going to be the correct statement. The appointment, posting and promotion of district judges in the state, so it is made by the governor. Yes. Involve consultation with the High Court. Yes. ठीक है. Needs concurrence with the president. No. District judge वाले केस में governor will take the decision in consultation with the High Court, but it does not, governor does not need to consult or concur with the president. ठीक है. So 1 and 2 is going to be the right answer, and hence A is the right answer. Consider the following statement: the district judge only exercises power administrative of subordinate court is matter handled entirely by the higher judiciary. Actually यहाँ भी थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर है. what it wants to say कि डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो सिर्फ जुडिशियल पावर को एक्सरसाइज करते हैं. ठीक है. अदर जो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं इनटू द सुबॉर्डिनेट कोर्ट, दैट विल बी हैंडल्ड बाय हायर जुडिशरी, दैट इज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. सो दैट इज इनकरेक्ट. एक्चुअली जो सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं आपके, सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं आपके, वहाँ जो भी काम होता है, ठीक है, चाहे वो जुडिशियल कैरेक्टर का हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कैरेक्टर का हो, वो सभी काम जो है डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर में ही, सुपरविजन में ही किए जाएंगे. सो दिस इज इनकरेक्ट. द डिस्ट्रिक्ट जज पजेस ओरिजिनल एंड एपेलेट जुरिस्डिक्शन इन बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल मैटर. सो करेक्ट बताना है. ओनली सेकंड इज गोइंग टू बी करेक्ट एंड हेंस बी इज द राइट आंसर. अगेन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट with reference to the administration and control over the district court and other subordinate courts. Okay, district court में impose any sentence including कैपिटल पनिशमेंट. सो ये बिल्कुल सही है. फांसी की सजा भी जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है अवॉर्ड कर सकती है. द पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ अ पर्सन बिलोंगिंग टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ अ स्टेट इज वेस्टेड इनटू लॉ डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. नो, दिस इज अगेन डन बाय द गवर्नर, राइट, इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट. ठीक है. The Bar Council of India recommends that the appointment of a person to be appointed as judges in subordinate court. So Bar Council, this is not the job of Bar Council कि वो रिकमेंड करे कि किसका प्रमोशन होना चाहिए, किसका एलिवेशन होना चाहिए. दैट इज नॉट द जॉब ऑफ बार काउंसिल. प्राइमरली जो है लॉयर्स की एक कह सकते हैं एसोसिएशन है जो कि एक सेट ऑफ गाइडलाइंस इशू करती रहती है और मॉनिटर करती रहती है अमंग द लॉयर एंड इन दैट पर्टिकुलर कोर्ट. ठीक है. उस सेट ऑफ बिहेवियर, सेट ऑफ नॉर्म्स का जो है पालन हो रहा है या नहीं. ठीक है. करेक्ट बताना है. सो ओनली 1 फ्रॉम माय असेसमेंट इज गोइंग टू बी करेक्ट.
ठीक है. So D is the right answer. Consider the following about NALSA, ठीक है. It is a statutory body. Yes, NALSA is a statutory because this body has been created through act, ठीक है. That's why it is a statute. It provides for free legal aid to the poor and weaker section. That's correct. This is very essence, or this is the purpose, very purpose for which NALSA had been created. It appoints judges of Gram Nyalaya in consultation. नहीं, it does not have any so power. It organizes Lok Adalat for amicable settlement of the dispute. So that's correct. Out of 4 statement, 1, 2, 4 is going to be correct, and correct ही हमें mark करना है 1, 2, 4. That is A is going to be the right answer. Consider the following about again NALSA. Okay, this is a repetitive question. We are not going to read it. ठीक है. The Supreme Court of India has directed all states to implement the draft witness protection scheme by the center. Again, we are also not going, because this scheme, witness protection scheme 2013, this happens to be a contemporary, not even contemporary, करना current affair consider, now contemporary. We are not going to attempt a 7-year-old question, ठीक है. So this is the due care that you have to take care, ठीक है. Whenever you are preparing for any scheme or any policy which is 6 to 7, until unless it has evolved, है ना, आज कुछ changes हुए हैं, until unless, otherwise आप लोगों को नहीं पढ़ना है. Consider the following statement with respect to NALSA and related bodies. Okay, NALSA lays down the policy, principle, guideline and frame effective and economical scheme for the state legal service authority to implement legal service program. So that's correct. In every state legal service authority and every high court, the high court legal service committee has been, that's correct. Supreme Court legal service committee has been constituted to administer and implement the legal program, service program in so far. So that is also correct. So all 3 statements from my understanding is going to be correct, and hence D is going to be the right answer. The state legal SALSA, the state legal service authority and district legal service authority discharge which of the following duties? To organize लोक अदालत, ये ऑलरेडी हम लोग ये प्रोविजन पढ़ चुके हैं. टू ऑर्गेनाइज लीगल अवेयरनेस कैंप, यस. नॉर्मल जनरल ऑब्जेक्टिव, प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ लॉयर इन लीगल proceeding free of cost to eligible persons. So that is also actually the purpose. So 1, 2, 3 from my assessment is going to be the right answer, and hence A is the right answer. Which of the following are correct with reference to लोक अदालत? ठीक है, अभी तक नालसा के बारे में पढ़ रहे थे. Now we are going to attempt a question of लोक. There is no court fee. If the court fee is already paid, the amount will be refunded if the dispute is so settled at लोक अदालत. So that is correct. अगर एक केस है जो प्री लिटिगेशन स्टेज में या फिर लिटिगेशन स्टेज में किसी कोर्ट में चला गया और वहाँ अगर आपने फी पे कर रखी है, इन केस उस केस को आप लोक अदालत में लाते हो, ठीक है, तो वो फी जो है अगर लोक अदालत उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर देता है तो वो फी जो है जो आपने दूसरे कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, तो वो आपको वापस मिल जाएगा. देयर इज नो स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजरल लॉज लाइक सिविल प्रोसीजर कोड एंड एविडेंस एक्ट while assessing claims. So that is also correct. The parties to the dispute can directly interact with the judge through their counsel, which is not possible. That is also correct. The award of the lok adalat is binding on the parties and it has the status of decree and it is non-appealable. No, see all these things from until here to here it is correct, but when it is saying it is non-appealable, आप इसके फैसलों के खिलाफ अपील नहीं कर सकते, so ऐसा नहीं है. So 1, 2, 3 A is going to be the right answer. Here it is inappropriately marked from my assessment. A is going to be the right answer. Generally लोक अदालत consists of a social worker acting as judicial. No, not a social worker. ठीक है, आपके जो हाई कोर्ट के जजेस वगैरह हैं उस कैटेगरी से, जुडिशरी से ही जो इनके लोक अदालत के जो जुडिशियल ऑफिसर हैं वो आते हैं. ठीक है, सो दैट्स इनकरेक्ट. द लोक अदालत कैन ओनली डील विद द केसेस ऑफ डिस्प्यूट एट अ प्री लिटिगेशन स्टेज. अगेन लोक अदालत जो है केसेस जो है जो लिटिगेशन में ऑलरेडी चली गई है ना, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है, सेशन कोर्ट्स में है, उस तरह के केसेस को भी लोक अदालत देख सकती है, नॉट ओनली केसेस ऑफ प्री लिटिगेशन स्टेज. ठीक है, ए लोक अदालत हैज रिक्विजिट पावर टू स्पेसिफाई इट्स own procedure and determination of any dispute coming. So that's correct. So 3 only is going to be the correct statement. The institution of lok adalat enjoys a status of, so lok adalat enjoys the status of statutory body. ठीक है, which of the following is our salient feature of Family Court Act 1984 that provides for establishment of family court. So I hope family court क्या होते हैं इस कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे. ठीक है, मैं ऐसी आशा करता हूँ. Family court can be established only by the local government. No, it cannot be established by the local government. Rather, it is established again by the state government in consultation with the High Court. It makes
it obligatory for the concerned level of government to set up family court in every city or town exceeding population more than, so that's correct, actually reflect हो गया आपका आंसर, so there is no point of discussing it, B is going to be the right आंसर। ठीक है, ए अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ फैमिली कोर्ट कैन बी फाइल्ड ओनली इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऐसा नहीं है। ठीक है, सीधा हाई कोर्ट में इसका अपील जाएगा। सो टू ओनली अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1956 इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन कैन बी इनिशिएटेड, सो इट कैन बी इनिशिएटेड ओनली इनटू द सुप्रीम कोर्ट। विद रेफरेंस टू द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नाउ दिस काइंड ऑफ बॉडीज यू विल फाइंड कि लक्ष्मीकांत में नहीं मेंशन है, इट इज जस्ट दिस काइंड ऑफ बॉडी विल बी आस्क्ड व्हेन दिस इज इन न्यूज इनटू द प्रीलिम, you will notice this kind of question, but it is only when it has been in any of the current events. Serving of former higher judiciary member cannot be appointed as chairman of the NCDRC, that is National Consumer Dispute Rate, so that is incorrect। ठीक है, दे कैन बी रादर, इनके जो चेयरपर्सन है वो सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग या रिटायर्ड जज होते हैं। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ अपील कैन appeal against such order to the Supreme Court of India, so that is correct। so इसमें क्या आएगा, A is incorrect but R is correct। ठीक है, so C is going to be the right answer। the person eligible for getting free legal aid इन इंडिया इंक्लूड डिफरेंटली एवर ले सकते हैं, यस। पर्सन बिलो द पॉवर्टी लाइन, यस। एक सर्विसमैन नहीं ले सकते, आपके SC ST वुमेन जो है या फिर कोई वो है अंडर ट्रायल है, उनको अगर वो पुअर है और नहीं मिल पा रहा तो उनको पर्सन इन कस्टडी, यस, इनको भी मिल सकता है। ठीक है, सो 1 to दोज पर्सन हुज इनकम इज बिलो 1 लाख, ठीक है, उनको भी। सो 1 to 4 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, दैट इज B इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। द दिल्ली एग्रीमेंट 1952, अब ये पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन पॉलिटी का नहीं बट पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का क्वेश्चन है। व्हाट वाज दिस दिल्ली एग्रीमेंट 1952? सो इट वाज एक्चुअली जो कश्मीर का से जो प्रपोजल इंटीग्रेशन का जो कश्मीर है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब साइन किया था कश्मीर ने, तो उन्होंने 2-3 चीज़ें मांगी थी, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा अपना फ्लैग और 1-2 और चीज़ें। ठीक है, सो द दिल्ली एग्रीमेंट वाज नथिंग बट इस प्रपोजल का एक एक्सेप्टेंस था। ठीक है, और इसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन फॉर्म ऑफ 35 इन फॉर्म ऑफ आर्टिकल 370 जो कि जिसका एग्जिस्टेंस अब अबॉलिश कर दिया गया, सो वो सब चीज़ें थी। सो इट वाज अ क्रूशियल to the integration of state of Jammu and Kashmir, so that is correct, A is going to be the right answer। now you have this question regarding article 370 and this question happens to be old, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं बिकॉज इसके प्रोविजन आंसर जो है अभी कुछ और उस टाइम के अकॉर्डिंग मार्क्ड होगा। लास्ट क्वेश्चन अगेन 35A के रिगार्डिंग है। ठीक है, सो इसको भी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं बिकॉज 35A की भी पोजीशन इन दिस है, क्वेश्चन हैपन्स टू बी अ ईयर ओल्ड। ठीक है, तो इसको भी वी आर नॉट डिस्कसिंग इट। ठीक है, सो विद दिस वी आर रैपिंग अप दिस सेशन, we'll meet you into the next session until we come with a new video. Till then, bye bye।